Good afternoon, everyone. This is Snowboy from Goenkan Prime TV. I'm here to update you with the latest English news updates. Here are some international news. The government of Canada has made a new rule for international students. Under this rule, now international students can work outside the college campus for only 24 hours a week. This rule is going to come into effect from September. Now, some national news. An email has been received threatening to bomb many schools in Delhi, NCR. Many renowned schools, including DPS, Mother Mary, and Amity, have been threatened through mail. Delhi Police, Bomb Disposal Squad, and Fire Brigade have searched the spot. The search is on. From Sports World, BCCI has announced the 15-member Indian team for the T20 World Cup. Apart from this, 4 reserve players have also been declared. Rishabh Pant has returned to the team after 16 months. Now, some local happenings. Haryana Board of School Education has released the annual examination result of Class 12th on Tuesday. Sirsa district has been ranked 13 in the state in examination results. Let's know a weather report. Today, weather in Sirsa is sunny with a maximum temperature of 32 degrees Celsius and a minimum of 20 degrees Celsius. Some Goenkan news. Goenkan celebrated the Workers' Day with honoring the workers of the school, paying gratitude in the morning assembly, and organized a small program to honor them. Now, over to Hindi news. नमस्कार, मैं परम हिंदी खबरों के साथ आपका स्वागत करती हूँ। पेश है कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कनाडा की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत अब अंतर्राष्ट्रीय छात्र हफ्ते में केवल 24 घंटे तक ही कॉलेज कैंपस से बाहर काम कर सकते हैं। यह नियम सितंबर से लागू होएगा। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है। डीपीएस, मदर मैरी और अमिटी समेत कई नामी स्कूलों को मेल के जरिए धमकी दी गई है। मौके पर दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। तलाश जारी है। अब बारी खेल जगत की। T20 विश्व कप के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी है। इसके अलावा 4 रिजर्व खिलाड़ी भी घोषित किए गए हैं। टीम में 16 महीने बाद ऋषभ पंत करेंगे अपनी वापसी। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम में सिरसा जिला 13वें स्थान पर रहा है। मौसम का हाल इस प्रकार है। आज सिरसा में धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोइनकन समाचार। कोइनकन स्कूल के श्रमिकों का सम्मान करते हुए सुबह की सभा में आभार व्यक्त किया एवं उनके सम्मान में एक सभा भी आयोजित की गई। धन्यवाद। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੋਇੰਕਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਐਸ, ਮਦਰ ਮੈਰੀ ਅਤੇ ਐਮਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। BCCI ਨੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਲਚਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਖਿੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 32 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। ਗੋਇੰਕਨਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾरण संस्कृत ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। नमस्कार है अहम आहना अस्मि संस्कृत समाचार अंतर्राष्ट्रीय वार्ता। कनाडा सर्वकारेण अंतर्राष्ट्रीय छात्राणां कृते नूतनः नियमः कृतः। अस्मिन् नियमे अधुना अंतर्राष्ट्रीय छात्राः सप्ताहे केवलं 24 घण्टाः एव महाविद्यालये सत्परिधात्
बहिः कार्यं करुतं शक्नुवन्ति। एषः नियमः सेप्टेम्बर् मासात् आरभ्य प्रवर्तितं गच्छति। राष्ट्रियवार्ताः। दिल्ली NCR इत्यस्मिन् अनेकेषु विद्यालयेषु बम प्रहारस्य धमकी दत्ता ईमेल् प्राप्ता अस्ति। DPS मदर मेरी अमिटी इत्यादीनां बहवः प्रसिद्धाः विद्यालयाः मेल् द्वारा धमकीकृताः सन्ति। दिल्ली पुलिसः बम निष्कासनदलः अग्निशामकदलः च स्थलं प्राप्तवन्तः अन्वेषणं प्रचलति। क्रीडाजगतवार्ता अस्ति। BCCI इत्यनेन T20 विश्वकपस्य कृते 15 सदस्यीय भारतीयदलस्य घोषणा कृता अस्ति। एतदतिरिक्तं 4 आरक्षितक्रीडकाः अपि घोषिताः सन्ति। ऋषभपन्तः 16 मासानाम् अनन्तरं पुनः दलं प्राप्तवान्। स्थानीयकार्यं पश्यामः। हरियाणा विद्यालय शिक्षामण्डलेन मङ्गलवासरे 12श कक्षायाः वार्षिकपरीक्षापरिणामः प्रकाशितः। परीक्षापरिणामेषु सिरसामण्डलं राज्ये 13 स्थानं प्राप्तवान् अस्ति। मौसमः एवम् अस्ति। अद्य सिरसानगरस्य मौसमः सूर्यः अस्ति तथा च अधिकतम तापमानं 32 डिग्री सेल्सियस्, न्यूनतम तापमानं 21 डिग्री सेल्सियस् भविष्यति। विद्यालयस्य वार्ताः। गोयङ्कान् विद्यालयस्य श्रमिकाणां सम्मानेन प्रातः सभायां कृतज्ञतां दत्त्वा तेषां सम्मानार्थं लघुकार्यक्रमस्य आयोजनं कृतवन्तः। धन्यवाद। अब खबरों का प्रसारण जर्मन में। Guten Tag, hier ist Johanna aus Keuken-Nachrichten-Rock. Heute Nachrichten ist internationale Nachrichten. Die kanadische Regierung hat eine neue Regelung für internationale Studierende erlassen. Nach dieser Regelung dürfen internationale Studierende nur noch 24 Stunden pro Woche außerhalb des Hochschulcampus arbeiten. Diese Regelung wird ab September in Kraft treten. Nationale Nachrichten. Es ist eine E-Mail mit der Drohung eingegangen, viele Schulen in Delhi NCR zu bombardieren. Viele renommierte Schulen, darunter DPS, Mother Mary und MIT wurden per Post bedroht. Sportsnachrichten. BCCI hat das 15-köpfige indische Team für die T20-Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Darüber hinaus wurden auch wir Ersatzspieler benannt. Rishabh Pant ist nach 16 Monaten zum Team zurückgekehrt. Lokalnachrichten. Das Haryana Board of School Education hat am Dienstag das jährliche Prüfungsergebnis der 12. Klassen für Aufschluss der Bezirk Sirsa belegte. Bei den Prüfungsergebnissen landesweit den 13. Platz. Wetternachrichten. Heute ist das Wetter in Sirsa sonnig mit Höchsttemperatur von 32 Grad Celsius, Tiefstemperaturen von 19 Grad Celsius. Goenken-Nachrichten. Goenken feierte den Tag der Arbeiter mit der Ehrung der Mitarbeiter der Schule, der Dankbarkeit bei der Morgenversammlung und der Organisation eines kleinen Programms zu ihrer Ehrung. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.